रोहित बिचकुले, रोहित बिचकुले. Vikram Jagtap. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Okay, okay. Now we will wait for another 2-3 minutes. Only 30 students joined now. So again we will wait for another 2 to 3 minutes. Now in yesterday's lecture we have seen that what is meant by moment of inertia and what is the importance of moment of inertia. Yesterday I have explained difference between centroid and center of gravity also with a physical example. I have explained what is mean by centroid and what is mean by a center of gravity with a physical example I have explained to you. Now next thing which I have explained clearly, what is the importance of moment of inertia and what is the basic formula to find out the moment of inertia. Yesterday I have explained what is mean by moment of inertia, how two type of a moment of inertia are present in engineering mechanics, that also I have explained to you. प्रशांत नागनी, प्रशांत जी, वो प्रशांत राव म्यूट करेगी. Yes, sir. म्यूट करेगी म्यूट. Okay. Now yesterday I have explained about the mass moment of inertia, what is mean by mass moment of inertia, and I have also explained what is mean by area moment of inertia. Now these two things I have explained to you. Afterwards we have started the basic formulas by which we can find out the moment of inertia of a composite structure. Basic formulas on which we can find out the moment of inertia of composite structure, and for that purpose we have taken a simple laminas which we have seen in the centroid. जो हमने सेंट्रॉइड में फॉर्मुलेज, सेंट्रॉइड में जो बेसिक लैमिनास देखे थे वही लैमिना हम इधर भी कंसिडर कर रहे हैं. ओके, so first we have considered this is a square or a rectangle we can say. Second one is the right angle triangle, and third one is the isosceles or equilateral triangle. And basic formulas I have explained. The moment of inertia on a centroidal axis for a rectangle, you might be know this, you might have written this. Ixx is equal to bd cube divided by 12 and Iyy is equal to db cube divided by 12. Am I right or wrong? Now next thing, we have seen about the right angle triangle. Ixx is equal to bd cube divided by 36 and Iyy is equal to db cube divided by 36. In this case, we have seen Ixx is equal to bd cube divided by 36 and Iyy is equal to db cube divided by 48. Is it correct or wrong? Please check the formulas which I have given to you. Correct, sir. Adesh Kulkarni.
आदेश, ओके. अमृता डोईफोडे, अमृता जी. Okay, I will ask some particular question to particular person. Kaivalya, Kaivalya. Kaivalya. Now, if you are not going to give the answer, definitely I have required to consider you are as an absent. I will put your absenteeism if you are not given the answer. Kaivalya. Is that answers whatever the formulas which I have written on the board? Is it correct or wrong? Correct. Okay. Okay. Mute yourself now. Okay. Now, these three basic formulas we have seen yesterday. Now we are going to see a fourth one, which is a circle. सर्कल का सेंट्रॉइड उसके सेंटर पे ही रहेगा. This is the x axis. This is the y axis. Now, if I wanted to find out the ix of the circle, the formula is pi r raised to 4 divided by 4, and iyy is also pi r raised to 4 divided by 4. Is it correct or wrong? Please check it. Pi r raised to 4 divided by 4, and iyy will be remain same. Ix and iyy will be remain same in this case. All these formulas you might have mugged up in 12th. 12th में आपने इसका जिक्र 12th में हुआ था. What is mean by Ix and what is the formulas of circle? Okay. Now next thing is that you are required to write down this somewhere, because on these formulas only we have required to solve the moment of inertia problems or numericals. Okay. Now next standard lamina is half circle. Next standard lamina is half circle. Now centroid, I know that it is 4r divided by 3 pi from a base. So this is the x axis and this is a y axis. X axis and y axis. In this case, Ix will become 0.11 r raised to 4, and Iyy is equal to pi r raised to 4 divided by 8. 0.11 r raised to 4, and Iyy is equal to pi r raised to 4 divided by 8. Okay. Now similarly we will take the next quadrant or next lamina. It is a quadrant of circle. We will take next lamina is a quadrant of circle. Xx and yy. Now centroid, you know that it is located is a 4r divided by 3 pi from both straight line. इस दो लाइन से कितने डिस्टेंस पे है? 4r divided by 3 pi. Am I right or wrong? So 4r divided by 3 pi पे centroid है. So what will be the formula of this? So Ixx is equal to 0.055 r raised to 4, and Iyy is equal to 0.055 r raised to 4. Ixx and Iyy will remain same in this condition. Now you are required to write down all these formulas which I have mentioned on the board, because without these formulas it is quite impossible to solve the problem. Without these formulas it is quite impossible to solve the numericals of a composite structure. Clear? And I hope that you might have written in your notebook somewhere you are required to write on a front page or at the back page.
ये फॉर्मूले आप ऐसी जगह लिख लीजिएगा जो इजीली आपको ढूंढ के मिल सके, आपको इजीली मिल सके, इस जगह आपको रखना पड़ेगा। इजीली आपको ये फॉर्मूलेज मिल सके इस जगह आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूलेज इट हेलो इज सर. क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ हॅलो सर. आशीष, हाँ बोल गे रे. हा सर, ते काल रेंज नसल्यामुळे आयडियाला प्रॉब्लेम आल्यामुळं काल मी शेवटचं लेक्चर केलं नव्हतं. ते अपलोड हा. करता का आज? नाही ते अपलोड करायला लागलो होतो मी, त्याला काहीतरी इश्यू यायला लागलाय म्हणून मी थांबलोय. आज हा, दुपारपर्यंत ते काल आयडियाला प्रॉब्लेम होता काल सर, म्हणून मी तुमचं लेक्चर केलं नव्हतं सर. नाही, रेंजच असू दे, नव्हती असू दे. काय. मी काय करतो आज, ते त्या लेक्चरला मी काल ट्राय भरपूर केला अपलोड करण्यासाठी, पण काय झालं ते अपलोडच होत नव्हतं, काय कळालंच नाही मला. टुडे डेफिनेटली दिस लेक्चर अँड प्रिव्हियस लेक्चर आय विल अपलोड ऑन YouTube. ओके थँक्यू सर. ओके. हेलो सर. अब हाँ बोला कि सर जो वहाँ पे लिंक है ना सर यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब की लिंक है सर, वो सेम है सर डिफरेंट लेक्चर्स नहीं की? नहीं नहीं नहीं, मैंने कल आपको टेलीग्राम पे भेज दिया ना, डिफरेंट लिंक भेज दिया मैंने, सभी लेक्चर के भेज दिए। हाँ, लेकिन सभी नहीं है सर वहाँ पे। सभी है, आपको मैंने कल भेज दिया है ना, कल आप कल टेलीग्राम के आपने लिंक देखे है क्या सभी? हाँ सर, देखा मैंने सर, देखा है? ऑल लेक्चर्स आर नॉट देयर सर। ओके ओके, अगेन आई विल क्रॉस चेक। मैं आज भी क्रॉस चेक ओके सर। करके जितने भी है उतने अपलोड करूंगा। ओके सर। सब मिसिंग आर, वहाँ पर भी थोड़े मिसिंग है सर। मिसिंग है क्या? मैं चेक कर Yes, sir. लेता हूँ आज, शायद अपलोड होने में कुछ तो दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैं कल से एक लोड अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Okay, now we'll start to solve the composite problems of moment of inertia. Okay, so we'll start problems related to the moment of inertia of a composite plane. Now standard lamina का तो आपको समझ में आ गया होगा शायद अभी तक, किसी को डाउट होगा इस फॉर्मूलेज में मेरे को बता दीजिएगा। If anyone is having a doubt related to this formulas, you can ask me now itself. जो आपने 12th में पढ़ा था और इधर आपको डिफरेंस लग रहा होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। I will clarify that. कि आपने इधर 12th में कुछ अलग लिखा था, IXX का वैल्यू अलग था, IYY का वैल्यू 12th में जो आपने पढ़ा था वो अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके डिफरेंट हो गए तो फॉर्मूलेज। ओके ओके, नाउ आई विल इरेज दिस। Now basic one thing we have required to remember that if you see clearly, जो भी स्टैंडर्ड लैमिना आपने देखे हैं वो स्टैंडर्ड लैमिना के सेंट्रॉइड पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है, लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हमको, सपोज दैट दिस इज अ टी स्ट्रक्चर इज देयर, ये टी स्ट्रक्चर है, इसका सेंट्रॉइड इधर होगा, इसका सेंट्रॉइड इधर होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ध्यान से समझ लीजिएगा। इस ऑब्जेक्ट का मैंने इसको फर्स्ट पार्ट बता दिया, इसको सेकंड पार्ट बता दिया, और दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के किधर तो इधर सेंट्रॉइड होगा। Am I right or wrong? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर होगा, लेकिन जो फॉर्मूलेज हमने दिए हैं, मैंने अभी दिए हैं, वो फॉर्मूलेज आप जरा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये इस सेंट्रॉइड के दिया है, ये एक्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई वाई एक्सिस, एंड इसका भी इस एक्सिस पे दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? होता क्या है कि हमने जो स्टैंडर्ड लैमिना में दिए हैं वो उनके सेंट्रॉइडल एक्सिस पे फॉर्मूलेज दिए हैं, लेकिन कंपोजिट प्लेन का सेंट्रॉइड और स्टैंडर्ड लैमिना का सेंट्रॉइड एक जगह होगी ही नहीं। आपके सामने एग्जांपल है, देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट का सेंट्रॉइड इधर है, सेकंड पार्ट का सेंट्रॉइड इधर है, कंपोजिट प्लेन का सेंट्रॉइड इधर है। नाउ मेनी टाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क moment of inertia about composite plane centroidal axis, means I can say that on this axis, capital XX. So due to that only yesterday I have mentioned that whatever the formulas we have written,
that formulas we have written by a small xx and small yy. I have not used a capital word there. So capital represent here, capital XX represent here about a centroidal axis. कंपोजिट प्लेन का सेंट्रोइडल एक्सिस जिधर भी है उधर पे उधर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नाउ अभी तक तो हमने हमारे जो फॉर्मूलीज है वो इसकी इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे है, लेकिन हाउ आई कैन convert it into capital XX, how I can transfer small xx into capital XX, or how I can transfer small yy into capital YY. So for that we require to remember one theorem which is we can call as a parallel axis theorem. We can call it is parallel axis theorem. In 12th you learned this. This theorem is very, very important. This theorem is very, very important. What parallel axis is saying that if you want to find out the moment of inertia about any axis, maybe a centroidal axis or any base, then Ixx is equal to I small xx plus A1 H1 square, or Ixx1 is equal Ixx1 plus A1 H1 square. Now I will explain all the terms here. Ixx1 represent moment of inertia of first object about his centroidal axis. Ixx1 represent, मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको. Ixx1 represent moment of inertia of the first object. Suppose that if I draw on the first object here, देख लीजिएगा, ये x axis है, moment of inertia about x axis about his own centroidal axis, Ixx1. A1 is the area of this first object, and H1 is nothing but the difference between capital XX and small xx. Difference between capital XX and small xx. Are you understanding or not? Now in this case there are two objects are there, so I will consider here Ixx1 A1 H1 square plus Ixx2, this is the moment of inertia about second object, plus A2 into H2 square. Ixx2 plus A2 H2 square means we have converted moment of inertia of a standard lamina into composite lamina. हमने जो सेंट्रोइडल एक्सिस पे, स्टैंडर्ड लैमिनास के सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था उसको हमको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो हमको A1 H1 से एडिशन करके एडिशन करना पड़ेगा. हमको A1 H1 पे एडिशन करना बहुत जरूरी है. सिमिलरली A2 H2 पे भी वैसा ही करना पड़ेगा. सो इफ सपोज दैट देयर आर 5 ऑब्जेक्ट small laminas or standard laminas, then I have required to consider all 5 laminas here. Means I have required to consider Ixx3, I have required to consider Ixx4, I have required to consider Ixx5. Clear? Again I am repeating this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझता नहीं है. मैंने अभी तक जो फॉर्मूलेज दिए थे उसमें स्मॉल और कैपिटल में यूज नहीं किया था, स्मॉल लेटर्स यूज किया था, Ixx एंड Iyy. ये Ixx मतलब उसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे, Iyy मतलब उसके स्टैंडर्ड लैमिना के सेंट्रोइडल एक्सिस पे. बट द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्ड. जो हम कंपोजिट लैमिना कंसिडर करते हैं वो कंपोजिट लैमिना एक नहीं है, 2-3 से कंबाइन हुआ रहता है. सो 1, 2 वी हैव कंसिडर, हियर वी हैव कंसिडर 2 स्ट्रक्चर, 1 and 2. अभी ये दोनों को मिला के इसका सेंट्रोइड इधर किधर तो आएगा शायद.
उसके एक्सिस से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो इट इज अ कैपिटल एक्सिस, and if I draw on the vertical line, it is a capital YY. Now, if I want to find out the moment of inertia about capital XX axis, if I wanted to find out the moment of inertia about composite plane centroidal axis, then how I can? So we have required to use a parallel axis theorem. We have required to use a parallel axis theorem. And what parallel axis theorem is saying that? The parallel axis is saying that Ixx about a centroidal axis is the combination of Ixx about a centroidal axis is the combination of moment of inertia about plane centroidal axis plus product of area into height square or product of square of height in square of height and area. So this we have required to prove. Parallel axis theorem we have required to prove, but I don't want to prove now itself. Just we have required to understand this. So Ixx is equal to, so meaning also I will tell that moment of inertia about a centroidal, main centroidal axis is equal to moment of inertia about standard lamina plus area into height. And what is the height? Height is nothing but difference between capital XX line and small XX line. Capital XX line and small XX line. Now similar formula we have required to apply for the vertical. Parallel axis theorem also we are required to use here for a vertical. So IYY, capital YY. I capital YY. So in this case also same formula, there will not be difference. So IYY1 small yy1 plus A1 into H1 square. A1 into H1 square. Formula is a remain same here. But if you see that here in this case, आप देख लीजिएगा, पहला पार्ट में ड्रॉ करता हूं, पहला first part I have drawn, or I will specify this so that there will not be a confusion. A1 H1 square, because there is also H is there, here also H is there. So whatever the H value you are going to find out here, वो value आप उधर रखेंगे, वो गलत है. Now what I am going to say here that, now what is the H in this case? So आपका first object का ये point है इधर, centroidal point इधर है, और composite lamina का centroidal point इधर है. Now this H represents horizontal distance between these 2 points. Here if you can see that it is H1 represent vertical distance. This H represents vertical distance in Ixx, because दो horizontal line के बीच का अंतर y से ही represent, दो horizontal line के बीच का जो अंतर है वो height ही represent करेगा ना. लेकिन ये इधर क्या है, आपका कैपिटल YY and small YY line lies on the same line. Capital YY and small YY line is lying on the same line. Capital YY की भी line and small YY की line same है, इसलिए इधर H1 is 0 आएगा, इधर H1 0 आएगा. So I will put here in this way. This height is, or this is the difference between capital YY and YY, and this H is difference between capital XX and small XX. So instead of that, what I will do here? Instead of I will put here HY1 and HY2. So there will not be a confusion. And here I will put here HX1. HX1 means horizontal distance. HX1 represents horizontal distance and HY1 represents vertical distance between two centroidal axes, between capital XX and small XX. HX1 is nothing but, sorry, HY1 is nothing but capital XX and small XX height difference, and here capital YY and small YY, that difference. So it is a horizontal distance, so that I have represented by X, and it is vertical height, so that I have represented by Y.
Are you understanding or not? Many times students get confused here itself. Here Ixx is there, so that they are considering, instead of y they are considering it is x. आपके और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. You might have somewhere at the location, suppose that you are away from me, it is a 200 kilometer. आप मेरे से 200 किलोमीटर दूर है. That distance is horizontal distance. Am I right or wrong? But object, you and me are, we are in standing position. आपका और मेरे का डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? You also in a standing position, I should also in a standing position. Then I will measure the horizontal distance. And if I wanted to measure the vertical distance, definitely I should be, or the if there it may happen that कि टावर का हाइट कितना मेजर, टावर का हाइट मेजर करना है. आप क्या करेंगे? अर्थ का लोकेशन से आप टावर के ऊपर एक लाइन लगाएंगे और उधर से वो हाइट मेजर करेंगे. अर्थ से एक लाइन और टावर का एंड पॉइंट का उससे डिफरेंस जो रहेगा वो हाइट रहेगा. लेकिन जो टावर में जो हाइट आपने लाइन ड्रॉ किया है, टावर के पास जो लाइन ड्रॉ किया है, सपोज दैट एक बिग टावर है, ऐसा कुछ तो ऐसा टाइप ड्रॉ करता हूं मैं. ओके, so this I want to measure the height of this. So how I will measure? I will draw this two horizontal line. Then I will say it is a h. And if I want to measure the horizontal distance, how I can measure? These two persons are standing here. So one is a line vertical, another line is vertical. Then I will say this is a hx1, and this I will say hy1. But lines are horizontal. These lines are horizontal. So it is a xx and capital Xx and small xx. And these lines are vertical lines. So it is a capital YY and small YY. Very simple funda. But still many students are get confused here. Are you understanding or not? So remember that if I wanted to find out the moment of inertia about x axis, I have required to consider the hy1 or vertical height. And if I wanted to find out the moment of inertia about y axis, I have required to consider horizontal distance. Because see here, this is simple funda. Y axis are vertical. Two y axis are vertical. Suppose that this is a capital YY and this is a small YY. How you can measure the distance between two? It is a hx1. Are you understanding? Similarly, two xx axis are there. One is the capital xx axis and small xx axis. How I can measure the distance or difference between these two? It is a hy1. So that we have required to consider, remember this, we have required to consider during these formulas, Ixx is equal to small ixx plus a1 into hy1 square, Ixx2 plus a2 into hy2 square. Similarly, here also same thing. Two objects are there, so it is Iyy2 plus a2 into hx2 square. In T structure, in a T structure, there are two parts are there, so that we have required to consider I capital YY is equal to moment of inertia about the composite plane centroid is equal to moment of inertia of first object on centroidal axis plus a1 into hx1 square plus Iyy2 plus a2 into hx2 square. Clear? So parallel axis theorem is saying very simple thing. Parallel axis theorem is nothing but a parallel axis is represented by I capital Xx is equal to I small xx plus a into h square. This is the parallel axis theorem. So write down somewhere this parallel axis theorem states that parallel axis theorem states that write down this formula I capital Xx is equal to I small xx plus a into h square. Ixx plus a into h square. Clear? Now time is running. Only we are having a 7 minutes. Those who have not kept attendance in chat box, please mention attendance in chat box. And someone has asked the question that parallel axis theorem proof is asked in exam or not. They are going to ask. I know that. I am going to take this
in the next lecture. After solving Sir, x1 and x2 notation for which axis we used? I capital XX represent for composite plane and No, small no. XX. Sir, x1 and x2. X1 is represent for first lamina है. इधर जो first object है ना, first object के लिए XX1 और second object के लिए XX2. सर कैपिटल एक्स एक्सिस के लिए जो हमने एक्स प्लस एक्स x1 जो डिस्टेंस है वो कैपिटल नहीं। एक्सिस से लैमिना के एक्सिस तक कंसीडर किया है ना? हाँ देख लीजिए ना, ये कैपिटल है, एक इधर देख लीजिए, ये कंपोजिट लैमिना का सेंट्रॉइड है, हाँ तो इसको हमने कैपिटल बता दिया. हाँ और ये जो इंडिविजुअल लैमिना है ना, ये इंडिविजुअल एक ही लैमिना में ड्रॉ करता हूँ. इसका सेंट्रॉइड इधर है, इसको मैं XX1 बोलूंगा एंड इसको हम XX2 बोलेंगे. एक्स x2. अंडरस्टूड ना? हाँ ओके ओके. एनी डाउट अगेन? Hello, sir. This theorem is very important. If you not understood this, I will give the assurance that you will not understand the next part of this chapter. हाँ बोलिए. हॅलो सर. हाँ बोलिए. हा सर, ते तुम्ही फॉर्म्युल्यात सर HY1 इज इक्वल टू म्हणजे HY1 ची किंमत 0 कशी येईल म्हणलं होतं. हा आता HY1 ची किंमत कशी येईल सांगतो तुम्हाला. नाउ टेक दिस एक्झाम्पल. आई विल ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम. इसका सेंट्रॉइड सिमेट्रिक पे ही रहेगा ना? Am I right or wrong? हाँ. सेंट्रॉइड किधर रहेगा? इसके सिमेट्रिक लाइन पे रहेगा. ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक और नॉट? यस. हाँ, तो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का देख लीजिए, सेंट्रॉइड इधर रहेगा. हाँ. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर रहेगा. एंड जो कंपोजिट प्लेन का भी सेंट्रॉइड इधर ही रहेगा ना? कंपोजिट प्लेन का सेंट्रॉइड भी इधर रहेगा. नाउ मेरे हा को सर, बता मराठीतून दीजिए, सांगा सर, एक्सप्लेन करून. हे बघा, पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रॉइड इथं राहिला. हा. दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रॉइड बी त्याच लाईनवर आहे. हा. कारण सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आहे ना. बरं. आणि कंपोजिट प्लेनचं बी सेंट्रॉइड त्याच लाईनवर असणार ना. And what is the त्याच्यामुळे H? What is the HX1? HX1 is the distance between two vertical lines. Now, is it any distance between? इसमें कोई दो लाइन है क्या? कैपिटल YY एंड स्मॉल YY. इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है ना. आपसे ही आपका डिस्टेंस मेजर किया तो कितना आएगा? आपसे ही आपका मेजर डिस्टेंस में जीरो आएगा ना. तो वैसा ही है. हाँ, तो इधर भी वैसा ही हुआ है. कैपिटल YY एंड स्मॉल YY लाइज ऑन सेम लाइन. लाइज ऑन सेम लाइन. समजलं. So that HX1 in this case it is a 0 because the two lines are on same. Two lines are same. ओके. Okay. So you have recorded when the object is a symmetric, no? So remember that on that line only. हा? काय म्हणताय कळालं? स्क्रीन फुल विजिबल होत नाही सर. काय होत नाही झिरो? स्क्रीन फुल विजिबल होत नाही. फुल होते की विजिबल? सर, ती बाकीच्यांनी अनम्यूट केल्यावर तुमची स्क्रीन विजिबल होत नाही, पूर्ण त्यांचं चित्र येतं असं. नहीं, मैं आई हैव पिन्ड माय स्क्रीन. स्क्रीन को मैंने पिन किया है, इसलिए आपको दिखना ही पड़ेगा. वो दिखना ही चाहिए आप. किसी और को कोई डाउट सर आपका नंबर दो. नंबर तो मैंने बता दिया था ना आपको. लास्ट लेक्चर को नहीं थे क्या आप? 703820 7038203000. This is my WhatsApp number. You can ask a question on this WhatsApp number also. Or solved problem you are required to send it on my WhatsApp. Up to 15 there will be a issue, but after 15th, once we have started our regular lectures, many students are going to come in the college, so definitely they will get idea, and I will cross check your answers directly.
So there will not सर any ऑफलाईन issue कधीपासून related. होणार आहे? Offline 15 पासून होणार की from 15th it is we are going to start offline. Those students are going to come college, for them it is offline. Those are not going to come college, for them it is online. ठीक आहे सर. Okay. सर हॉस्टेल सुरू होणार आहेत? हॉस्टेल नाही तो सुरू होणार. हॉस्टेल कधीपासून स्टार्ट होणार आहे? ते मलाही माहित नाही अहो, पण होतील लवकर 15-20 दिवसात होतील चालू. एक 20-25 तारखेला होतील चालू. आणि सर ते स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरायचे सर, ते कसं भरायचे? तुम्हाला कदम सरांनी एक्सप्लेन केलं नाही का स्कॉलरशिपचे फॉर्म कसे भरायचे? नाही. No, one thing you do here today, one lecture is there, Kadam sir's one lecture is there. In that lecture, he might explain to you, वो कैसा भरना है वो सर बताएंगे आपको शायद. नहीं बताया तो आप पूछ लीजिएगा. लेक्चर स्टार्ट होने के पहले आप उनको बता दीजिए, सर हमको फॉर्म भरने को नहीं आ रहा है, तो आप हमको गाइड कर लीजिएगा. ठीक है सर. हेलो. हाँ, आपका आवाज कम आ रहा है, कौन है? हाँ बोला ही बुलबुल. हाँ बोल की काय बोलला? अपलोड करणार आहे की मी हे लेक्चर. हा टेलिग्रामवरच केलं होतं काल मी. हा टेलिग्रामवर मी सगळे माझे कालचे लेक्चर अपलोड केलेले आहेत. कालचं एक तेवढं राहिलेलं आहे बिकॉज देर आर सम इश्यू रिलेटेड टू दॅट व्हिडिओ. Still I am finding out what is the issue, but definitely tomorrow, today itself I will upload today's lecture and yesterday's lecture, and whatever the lecture which I have not posted, that also I will post on YouTube. But remember one thing, if you are having any queries or any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp also. It's not hard and fast that you are required to just cross check YouTube and you are required to ask the question. So you can ask anytime to me. Okay, less than 1 minute left now. Those who have not kept the attendance in the chat box, please mention your attendance in chat box. सर नोट्स होतं काय? नोट्स वगैरे काय नाही, जे मी शिकवलं तेच नोट्स राहतात. त्यामुळे नोट्स वगैरे